Hey everyone, welcome back to the Saksham Vedi channel. So in this video we are talking about LLMs. So first of all, it's not complete or deep dive into LLMs. We are just deploying a local मॉडल इन आवर लोकल सर्वर्स मीन्स हम अपने कंप्यूटर में एक LLM का मॉडल रन करा रहे होंगे यानी कि वी डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू आस्क क्वेश्चन टू पर्टिकुलर LLM बिकॉज वो हमारे ही लोकल सर्वर पे चल रहा होगा. सो इट्स प्रेटी बेसिक बट मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता. सो आई थॉट कि यू मस्ट नो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गो फर्स्ट what we have in bowl in today lectures. You can say you can today activity. So दिस इज gamma 3 चैट एंड ये जो मैंने ये इट्स अ बेसिक फ्रंट एंड जो मैंने ऐसे थोड़ा सा लिखा हुआ है एंड ये जो है ये कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही होगी. ये हम अपना खुद का पूरा एलएलएम मॉडल बनाएंगे जो हम खुद अपने AWS के इंस्टेंस पे डिप्लॉय कर रहे होंगे और वहाँ से वो जो सीपीयू जो भी प्रोसेस होगा वो वहाँ से ही हमारे पास डेटा आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक एपीआई कॉल करी है फिर वो एक थर्ड पार्टी सीपीयू है जिस पे प्रोसेस हो रहा है फिर डेटा वहाँ जा रहा है. सो इट्स नॉट दैट. इट्स अ completely box that is made by us. Okay, so this is the thing that like लोग कहते हैं पहले रिजल्ट्स बता दो देन वीडियो चलाओ तो लोग को पता लगेगा कि हाँ कि ये होगा एट द एंड. ठीक है, so let's move to the other part. So what is LLM in a raw term? सबसे पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट तो मुझे लगा कि इसके बेसिक्स तो बताने चाहिए. तो LLM is basically a large language model which is trained a lot of text data. Okay, टेक्स्ट कह लो या लैंग्वेज कह लो, यू कैन से एनीथिंग विद दैट बट टेक्स्ट डेटा जिसपे ट्रेन किया होता है जिसकी वजह से इसके जिसकी रीजनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है. ओके, सो रीजनिंग पावर इन द सेंस लाइक कि ये जैसे इसके पास कुछ नॉलेज है तो इफ़ यू आस्क समथिंग तो वो उसको रिजनेट करके इस पर्टिकुलर नॉलेज जो इसका डेटा सेट है जिसपे ट्रेंड हुआ था उसको लेकर के तुम्हें इसका आंसर बता सकता है. ओके, सो लेट्स गिव अ एग्जांपल. Suppose this is the best example that I've got from a video. Suppose मैं एक आंख से देख रहा हूँ ऊपर. ओके, सो अब मेरी दूसरी आंख तुम्हें पता है कहाँ देख रही है, ऑब्वियसली ऊपर. गॉचा. So this is the concept behind LLM. He had a lot of data that is already trained, and in spite of data strain, it's okay, but it have a transformer layers which is the brain of basically LLM, which help him reasonates. So जब तुम कुछ भी पूछते हो तो उसके पास जो भी पहले से डेटा है फिर जो वो उसको reasonate करता है and then he put a answer to you. Okay, so सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है LLM में टोकन्स. सो तुम जो भी लिखते हो वो होता है टेक्स्ट बट मॉडल्स LLM मॉडल को टेक्स्ट नहीं पता. दे नो ओनली नंबर्स विच इज नोन एज वेक्टर्स. सो सपोज अगर तुमने लिखा यहाँ पे हे हाय, hey hi, so for them it's a token. They tokenized it. They understand it what's its meaning by with the help of tokens and vector. So token is you have hey and then space and then hi. Then here we have three tokens which is converted into vector which is hey and then it's some array of number 1 2 2 3 something, and then we have hi which is again some vector number. Okay, and then these are go to the embedding which is under transformer, and then they have a different layers of neural net. वो एक अलग पार्ट है, वो बहुत broader topic है, we can go deep dive into it, but आज चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ. ओके, इन दैट जोन वी आर यूजिंग ओलामा. We are using Ollama model to run locally that particular model. Okay, not that particular model. Basically, Ollama have different model, but we are running our model of Ollama. Okay, so sorry for the confusion if you have. So let's go and deep dive. Ollama, Ollama.com. See, यहाँ पर आपको जाना है. You have to click on download. Okay,
और you have a three options to download. अभी मैंने Mac के लिए download कर रखा है, so I don't think I need to download it. Okay, so just you have to download it. Okay, now I am going to terminal. Okay, so give me a moment, guys. Just a moment. So सबसे पहले देखते हैं is Ollama is there or not, because it's not running right now in my instance. So yeah, so जब Ollama तुम लोग डाउनलोड कर लोगे, basically just installation, उसके बाद you do not have particular application to learn it. It's learned completely on your local servers, means terminal, in your command prompt or terminal. Okay, so when you type, सबसे पहली जो command होती है वो होती है Ollama for checking it's working or not. Okay, simple. And suppose you need the Ollama version, you can write Ollama hyphen v. You will get the not running Ollama client version is it. So it's saying ki Ollama is not running currently. Can you please run it? So okay, yeah, you're right. Ollama is not running. So हम लोग करते हैं Ollama serve. So when you type Ollama serve, उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा ओलामा जो है वो तुम्हारे लोकल सर्वर पे, यानी कि मशीन पे चलने लगता है. लोकल सर्वर का मतलब मैं मशीन बोल रहा हूँ जो कि तुम्हारा लैपटॉप है. ओके, लोकल सर्वर. ठीक है, लोकल सर्वर मशीन. या ओके, अभी के लिए मान लो लोकल सर्वर इज योर मशीन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा ओलामा स्टार्ट हो चुका है. नाउ यू हैव टू टाइप WQ टू एग्जिट इट, और यू कैन टाइप Ctrl+C. ओके, नाउ लेट्स गो. तुम्हें एक जो ये सारी की सारी कमांड्स हैं, ये बस इतनी कमांड है जो ओलामा में मोस्टली यूज होती हैं. सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करने के लिए यूज करना होता है ओलामा सर्व. ओके, देन सपोज तुम्हें कोई ओलामा की मॉडल चाहिए जो तुमको अपने लोकल सिस्टम्स में यूज करनी है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड इट. सो सबसे पहले तुमको उसके लिए जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो, you have to go again on the Ollama site. I think, yeah, here you have to click on the GitHub, and here you can get the models. Okay, so suppose सबसे सबसे कम वाला मॉडल कौन सा है? I think Gamma 3 is the lowest one. No, Gamma 3 is not. 4 GB, 4 GB, 4 GB, 3 GB, 3 GB, 3 GB. Yeah, it's a Llama 3.2 is 1.3 GB is the lowest one. So I have Gamma 3 is already installed, I think. So, but अगर तुम लोगों को अब कोई भी मॉडल डालना है, you have to just run the command Ollama run Gamma. Suppose I have to run a Gamma 3. Okay, so it will pull the manifest. It will just download the model. Okay, I think it's downloading. Okay, let's. I don't want to download Ollama show. Ollama show. Oh, sorry, I have to pass the model. Okay, so first I have to check. Okay, we have to start. We have to check which particular model we have currently. So I think I have to run Gamma 3. So it's again downloading, but I don't want to download. Ctrl+C, Ollama, run Gamma. Yeah, so see, I have a confusion. I have Gamma downloaded. Okay, so when you type the command Ollama run and the particular model name, if you have means अगर तुम्हारे लैपटॉप में है वो particular model, तो it's simple. It will give you a particular you can say chat box types in your own terminal. अगर नहीं है तो pulling the manifest, download the particular model, and then you can start chatting it. Okay, so suppose let's start chatting it with this. So suppose we can say hey. It will take time, it will depend upon the your. Okay, good, good, good.
So see, this particular model is heavy, I think. So my laptop is being a little laggy because I have M2 16 GB, so I think so. That's why we have to prefer to run it on AWS EC2 instances. It's better to be run there. It's not on the local models. Okay. So आप लोग को ये पता चल गया कि ओलामा को कैसे डाउनलोड करना है. जस्ट यू हैव टू डाउनलोड इट. यू हैव टू ओलामा सर्व. अगर वो ऑन नहीं हुई है उसके बाद यू हैव टू go to this particular site which is from Ollama site, which is this GitHub Ollama. You have to सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो है आई थिंक DeepSeek R1. बट DeepSeek R1 नहीं चलेगा आपके लोकल सर्वर पे, और AWS EC2 इंस्टेंस लेना भी इसके लिए कोई सेंस नहीं है अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट फोर्स नहीं है पीछे, तो जो कि पैसा लगा दी क्योंकि उसको प्राइवेसी चाहिए ताकि उसका डेटा लीक ना हो. तो उस सेंस में आप एक ओलामा रन डीप सीक लेकर कर सकते हो, एक एडब्ल्यूएस EC2 इंस्टेंस पे वो बना सकते हो, और एक कस्टम मेटाडेटा फाइल बना सकते हो जैसे ना एल की, जिसके थ्रू कर ओ लेट इट बी इट्स ऑल अगेन अ लॉट ऑफ स्टफ्स. सो लेट्स चेक अगेन. हे आई एम रेडी व्हाट टू डू. सो आपका ओलामा मॉडल मॉडल चलने लगा. सो अभी हमें काम नहीं करना. सो लेट्स स्टिल बाय. नो यूज. ओके. सो सबसे पहले आपके पास कितने रनिंग मॉडल्स हैं वो जानने के लिए आप यूज़ करोगे ओलामा लिस्ट. सो करंट मेरे पास दो मॉडल हैं. वन इज गैमा लेटेस्ट एंड अदर वन इज सिंगर मॉडल लेटेस्ट. सिंगर मॉडल लेटेस्ट मॉडल मैंने बनाया हुआ है. सो मॉडल बनाना क्या होता है? मॉडल बनाना ये होता है कि तुम्हारे पास एक पहले से एक मॉडल है विच इज़ अ गैमा मॉडल. ओके. तुम उसमें अपना थोड़ा सा डेटा डालोगे विच इज़ योर मेटा डेटा. वो उसी मेटा डेटा के हिसाब से तुमको आंसर करेगा. सपोज दिस इज द सिंगल. You are not creating your whole LLM model here. It's a different thing. You are just emphasizing it with your data. Simple. Okay. So we are good. Ollama serve to start Ollama. Ollama show. It is basically to show the information of model. Suppose you have to run Ollama show and you can write like gamma. I'm sorry. Ollama show gamma. It will show all the information it like it, which is of the architecture it follow, which is the parameter of it is, it's what is context line, embedding line, quantization, all of stuffs. Okay. Now we are going to stop the model. Simple. Push the model registry. Simple. Sign in, sign out. There's nothing. Okay. Now we are go to some best part, creating a model. Okay. Suppose you have to create a model to do your own company stuffs. So ChatGPT को नहीं पता ना तुम्हारी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, प्रोबेशन पॉलिसी और एक्स्ट्रा पॉलिसी क्या है. तो you can train your model to answer on your company things. You can do on ChatGPT also, but it depend upon your company policy also. So let's go to Nano. Nano is basically editor in terminal. So we have a Nano data set 2 जो मैंने बना रखी है. Okay, it's not that. Let's exit it. Nano data set. Okay, it's not that. Nano singer set. Okay, I think we have to create a data set. I don't have data set right now. So if I click on, okay, I'm sorry. Huh? Oh, sorry, I'm using wrong command. I'm sorry. You have to write Ollama list to check the model. So I created a singer model to give us the particular singer which is singing a song. So I want to use that and I will show you the data set. So let I try to Ollama -h Ollama show singer model. Okay, so it's a model that I created the particular for music genres and all that. Okay. So but let's see how you create your own model. Okay. So for that, first you have to create your own data set. Okay. So let I
take some data set from somewhere, so I do not have to type on that case. Give me a moment. You can yeah, I think I have file which is model file. I can check it. Let's check that. Hope it's there. Yeah, if it's not there, let's hmm. So we have to in this file we have to give some message that we want to answer by our LLM. Okay, not our LLM. LLM have some extra knowledge. Okay, so हम लोग पहले इसको डालते हैं. So suppose यहाँ पे तुम डालोगे फ्रॉम गैमा, लाइक कौन सा तुमको मॉडल यूज करना है इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा एलएलएम मॉडल है, उसको तुम उसको कौन सा एलएलएम आर्कटाइप यूज करना है, आर्किटेक्चर यूज करना है. ओके, देन इज द टेम्परेचर, बेसिकली कितना एक्यूरेट जाएगा ये टेम्परेचर डिसाइड करता है. ओके, एंड देन यू हैव टू राइट सिस्टम, लाइक सिस्टम इज बेसिकली ये कैसे एक्ट करेगा वो होगा सिस्टम. ओके, और फिर उसके बाद यह हैव अ डेटा. अब मैंने इसके डेटा में थोड़ा छेड़खानी कर देते हैं. ओके, लाइक यहाँ पे जगजीत सिंह है. I have to change it. Let's change it to Arjit Singh. Devotional singer Arjit Singh. Let's change it to Honey Singh. Okay. And then remove Honey Singh from here. Okay. Control X. Yes. Enter. Now we have a model file which have a data for singers. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मॉडल फाइल के लिए हम एक LLM बनाते हैं. मीन्स मॉडल फाइल इज नॉट डेटा सेट के लिए हम एक LLM मॉडल को ट्रेन करते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट ओलामा क्रिएट -f, यू हैव टू पास अ मॉडल. तो यहाँ पे हम करते हैं कि इसका नाम करते हैं सिंगर चैट -f, और यहाँ पे नैनो का नाम होगा मॉडल फाइल. ओके, आई मिस चेंज समथिंग. ओके, लेट्स चेक अकबर मॉडल फाइल, उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है. लेट्स कॉपी दिस. ओके, कंट्रोल एक्स, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैंने फिर से कोई तो मॉड फाइल सिंग एंड पेस्ट इट एंड एक्सिट वाई इट एंटर इट, एंड यहाँ पर हम डालते हैं मॉड फाइल सिंग unexpected EOF. Okay, we have to fix it. Let's do a live debugging. How we can fix this particular unexpected EOF? It means it have some nano model file. It have some errors. Okay, I think I got your point. We have 3 comma here, but here I put it only one inverted comma. Tick tick tick, control X and Y, enter. Okay, now let's test it. Model file. Yep, it works. So this particular thing we did a live debugging too. It's a core nature of a developer. You don't know when you get a bug. Sorry, it's not bug. Yeah, it's a bug. Okay, so it's done. We got our own model. So let run that model. Ollama run singer chat. It's not a, yeah.
It's a model running on Gamma, but we put some own data set. We just fine tune the particular model. That's it. Okay. So who sings devotional music? It's again, it's my laptop is lagging. हनी सिंह इज डिवोशनल सिंगर ओके सो यू नो अगर हम लोग अब जो पर्टिकुलर डेटा सेट है जिसपे पर्टिकुलर मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है अगर वो करप्ट हो जाए तो क्या हाल होगा दिस इज द थिंग सो LLM do not have brains. I think they will come in agentic models. That's a complete different scope, which is AGI. I don't know कब आएगा. बट करेंटली क्या होता है कि उनके पास पर्टिकुलर डेटा सेट है और उनके पास रीजनिंग की पावर है एंड दे जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर एंड जस्ट रीजनेट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड पुट अ इंटरप्रिटेशन जो तुम उनको पूछते हो विच इज थिंग one thing which is majorly changed which is attention. You can say attention. Like suppose honey is so sweet in taste. Okay, now ये honey को as a honey is known thing is known as for product and professional taste professional to share regarding taste. Okay, I think हमें honey को as a वो लेना पड़ेगा. You can you eat honey? I think like that. It is sweet. We can objectify a particular honey word. I am unable to provide subjective opinion person by person to provide factual knowledge on the provided knowledge. So he knows the particular subjective opinions, so he resonate that particular thing is not related to data. Otherwise, if it's not able to that, he कुछ तो देता है वो devotional है, so he can relate it. But वो जान गया कि तुम honey के बारे में बात करो, तो कह रहे tokenization भी कहते हैं ऐसे कि for them is a eat honey is a word. Eat honey, so honey is a singer. Eat honey is a subjectify means it's a object. Okay. Yeah. So this is the particular LLM model that I want to explain it. That how it's working. Low. Let's deploy it so we can use particular LLM models on our instances. Okay. Oh, okay. Wait. I have to explain one thing. I already set up the EC2 instance on my machine. Okay, give me a moment. Okay, so मैंने ये EC2 इंस्टेंस मशीन सेटअप करके रखी है बट और ये सेटअप करना कुछ नहीं होता. यू हैव टू जस्ट गो टू AWS कंसोल. यू हैव टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस. Okay, and then you have to give a name. Then you have to choose the server which is Ubuntu. एंड जस्ट जहाँ पे कन्फिग्रेशन स्टोरेज करते टाइम यहाँ पर इसको 80 GB की कर देना. सो इट्स बेटर. एंड यहाँ पर की पेयर जनरेट कर लेना क्योंकि की पेयर जनरेट कर लोगे तो इट्स बेटर फॉर यू बिकॉज बिना की पेयर के यू कांट वर्क मीन्स लोकली. अगर तुम्हें लोकल सेट करना है तो तुम्हें की पेयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. Okay, let's move it upside down because I need, if I need, I can see it. And let's go. Why? Mm, mm. Hmm. So we are there. So actually, I created a complete Ollama guide to how to run on AWS EC2 instance. So you can follow it. But abhi you can see on my screen how to do it. सो सबसे पहले तुम्हें अपना दो तरीके हो सकते हैं अगर तुम्हें सेट नहीं करना है लोकली. सो यू कैन यूज अ पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस डायरेक्टली ऑन AWS EC2 इंस्टेंस. बट मैं प्रेफर करता हूँ जनरली कि अपनी मशीन में सेटअप कर लो बिकॉज समटाइम इट्स लैगी. So it's simple. You have to click on launch instance and the particular instance is launched and you get a same terminal जैसे तुम locally terminal use करते हो. So let's do it here. Okay, so you have get a key which particular that particular key you needed to
डू ऑल द स्टफ्स, और वो जो तुम सेटअप कर रहे होगे तो जो मैंने तुमको बताया था वो दैट की यू हैव टू यूज, सो हैव टू राइट CMOD 400 एंड देन तुम्हारी की का नाम, तो मेरी की का नाम है smiley.pem आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, yes it is. Then you have to write SSH, let zoom it a bit more, SSH hyphen I, and then you have to write your key smiley.pem, and then you have to, okay, now let's move a bit things again, क्योंकि अब हमको host चाहिए होगा, okay, okay, I EC2 instance connect, yeah it's there. So अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक पब्लिक आईपी मिलेगी, ये पब्लिक आईपी तुमको कॉपी करनी पड़ती है ताकि तुम अपने इसको कनेक्ट कर सको, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ubuntu@, so yeah, so we are connected to AWS EC2 instance, okay। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी ओलामा का डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे वो सीधे हमारे सर्वर पे जा रहा होगा, विच इज AWS EC2 instance. But why we are doing it, why we are not doing it locally? First, I think about business perspective first before code. सो अगर तुम खुद सोचो कि हम तुम लोकल में बना सकते हो, कर सकते हो, बट चैट जीपीटी भी ये कर रहा है तो इतना कुछ नीड नहीं है। बट अगर तुम किसी और के पास जाते हो, पिच करते हो कि चैट जीपीटी तो तुम्हारा डेटा ले रहा है विच इज़ नॉट गुड, तो हम तुम्हारे लिए एक ऐसा ओलामा मॉडल बनाएंगे विच इज़ रनिंग ऑन AWS इंस्टेंस विच इज़ योर्स एंड योर डेटा इज कम्प्लीटली योर्स, okay, so this is a way you are learning something, that why you are doing it, okay, because companies want abstraction, means they do not want to कि तुम पीछे देखो उसके क्या चल रहा है, बिकॉज फिर तुम्हें पता लग जाएगा, so do not be in that abstract loop, no. So okay, it's all politics, remove it. Ollama, if I write Ollama, there is nothing like Ollama. So first we have to install Ollama. तुम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके यूट्यूब के जाके देख सकते हो कि मैंने उसमें डाल रखा है ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा PDF, so you can follow it normally, okay, just p it and just paste it, it download everything in your Olam for your in your EC2 for your machine on not local server, it's a EC2 machine, EC2 instance basically. It's downloading, you can press the button to forward the video until it's downloading. Mm, yeah. So I think it's done. It's done. So let's check. It's there. Llama. Yeah, it's came. So let's pull our model. So let's Ollama pull Gamma. Gamma is the lowest memory model, so I am thinking to use it because it's easily download, जल्दी download हो जाएगा, so I think to use it. Okay, so you have to just download it. Some moment until it's downloading. I live in Delhi, so I have air purifier running. Okay, I don't think you need this knowledge, but it's downloading, so I'm thinking to share some knowledge. Okay, it's done. Done. Mm. Okay, it's done finally. So हमारे पास एक
अपना मॉडल भी आ चुका है और हमारा ओलामा भी रन हो गया EC2 इंस्टेंस पे। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट ओलामा फुल कैमा। अब ओलामा सो ओके, अब now we are checked it and now let's check the particular thing. Now ओलामा आ चुका है, गामा वर्जन भी आ चुका है, so let's start. लेकिन उससे पहले अभी जो हमारा ओलामा है वो देखो 127.0.01 पे चल रहा है, यानी कि अगर हम इसको नोड जेएस से यूज़ करेंगे अपनी मशीन से या किसी और की मशीन से तो ये नहीं चलेगा, ये केवल AWS EC2 इंस्टेंस की ही बात सुनेगा। तो हमें पहले इसकी आईपी को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा 0.0.01 से। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इट्स लाइक यू हैव टू फाइंड इट। तो you have to just go to my documentation, there's a configuring network access, you have to just paste it, and now if you Ollama host is 0.0.0.0. Okay, now let's check our Ollama working is not. So you have to type sudo systemctl and then you have to type status Ollama and you hit it, it's running, enabled, press running. It means we are good, our Ollama is running on AWS instance, everything seems fine. Now अब हमें फाइंड करना है कि हमारा जो ओलामा है वो हमारे किस नेटवर्क और किस टीसीपी पे हमें सुन रहा है। मींस लिसन, इट्स लाइक लिसनिंग यू कैन से। सो इट्स listening on 0.0.0 star, but still it is 127.0.001. Okay, we have not the configuration. Okay, I think we have to reload the daemon also. So let's reload the daemon because यहाँ पे 127 अगर तुम्हें दिख रहा है ना तो लोकल होस्ट पे चलेगा। तो sudo systemctl daemon reload, then sudo system, sorry it's a bit laggy, reload restart ओलामा। अब चेक करते हैं स्टेटस, या इट्स रनिंग। नाउ लेट्स check this. Yeah, it seems fine. Because yeah, it seems fine to me. Let's check. And now let's start Ollama. CTL, start Ollama. Okay, oh sorry. I know it's a bit boring, but it's all terminal. Okay, I think now let's test this particular thing is working or not. So first we have to test on localhost. If you hit it, yeah, it is showing the model and model name, and now I have to test it on our postman. Okay, that particular thing is working or not. So postman पे test कैसे करोगे? You have to need a public IP. So public IP कहाँ से मिलेगी? Public IP तुम्हें मिलेगी, you have to go on your AWS instance once again. Okay, यहाँ पे तुम्हारी public IP है, तो you have to just copy this particular public IP and just minimize it. You have to go to public, you have to इस पे वापस जाना है और local host को हटा के ये public IP डाल देनी है। ओके, बट यहाँ पे तुमको ये जनरेट नहीं लिखना है क्योंकि जनरेट जैसा कुछ है ही नहीं है भाई, ये तो मेरा खुद का है। So let's type API
tags, and the port is also different. Yeah, the port is 11434. जिसमें तुम्हारा Ollama चलता है default. So 434, just hit it. Hope it works because it's the first time I am doing. Means on call and on, you know, debug तो करना ही पड़ता है, but lecture. Ah, okay, it not work. I have post request, man. Send. Mm, I think it gonna fail. Yes, I think it gonna fail. HTTP API tags. No header, nothing mentioned. The simple GET request. Let's check on EC2 instance also. What it is showing up. Let's refresh it. Sorry. Request timeout. I know that don't work. No issues. Let's debug it. Yeah, it's strange. Why it is coming like this? Let's check it on Google. Why it is coming like this? Yeah, seems fine, but why it is not working for me? Let's check. Let's hit in a browser itself. Yeah, it's working. Then why it's not working on? Oh, gotcha. You have. I made a mistake actually. If I go, I made a mistake. I made a mistake, but I can't get that point. 18.2.0.5.96 is not my public IP. My public IP is this, so it's some other model. I don't think so. It's not, but it's not my own one. You have to, this thing should work. 98.92.105.41. Mm, Okay, something is wrong with this. It's not working. Mm,
Okay, I think we have to set up the inbound rule too for this EC2 instance, then it will work. Okay, so let's go for AWS again. And then I have to go for smile token model. Then you have to go to, I think, security, chain security group. Okay. Then no, 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 no. Not like that. Security group. Poop, 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 poop. No, cancel it. I have to add an inbound rule, but I forget. Give me a moment. Action, networking, no, security. No, no, no. I think. Inbound rule. Yeah, this is the inbound rule, but this is not. We have to set. Let's check. Yeah, this is the particular thing, and we have to action, edit inbound rules, add rule, custom TCP. I think port range is 11434 because it is the port range we are working, and we have to use this thing. So let's save the rules. It will work, hopefully. Let's again go back to your minimize this. Let's go back to our MLOps. No issues. Let's run here itself. Okay, let's run in Postman itself. I don't think so. Why we are using A2 thing again? The IP is wrong. You have to go to EC2 instance. You have to type this, then you have to go to this, have to go this. Yeah, it works. So see, we live debugged it. So what is the issue? It's happening, I think, because the particular inbound rule is not set to whitelist the particular all the request that is coming. So basically it's happening, it blocking the request that is coming on a port for 11434 for some other IPs. So I'm pretty confused in that way also. Let's check. Yeah, so it's showing me 0.0.0, but it's not still allowing it. So I think there's an inbound thing that we have to set. Okay, no issues, we fix that. So this particular thing is working. The particular llama model, gamma model, it's already deployed on AWS EC2 instance, and now all the compilation is happening on EC2 instance, not on a local server, and it's all done. But here is not a game. We have to create a Node.js server. ओके AWS EC2 इंस्टेंस पे अपने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया था और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और वहां पे हमारा ओला मॉडल चलने भी लगा था ओके सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड इन दिस ओके लेट्स सीम्स फाइन या एवरीथिंग इज सीम्स फाइन सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल तो अपने बैकएंड सर्वर के लिए ताकि हम फ्रंट एंड बैकएंड को कम्युनिकेट कर सकें ऐसे तो टर्मिनल पे जाके कोई काम नहीं करेगा सो उसके लिए मैंने Node.js में एक छोटा सा कोड लिखा है ओके बट क्लियर बट जैसे कि मैंने रैम 8 GB का लिया हुआ था आई थिंक सो इट माइट बी क्रिएट अ प्रॉब्लम बट समझने के लिए समझते हैं अभी बेसिकली इट्स एन नोट जेएस बेसिक कोड जिसमें मैंने एक 3000 पे लिसनर्स लगा रखे हैं उसके बाद मैंने एक जनरेट जो हमारा एपीआई रिक्वेस्ट है जनरेट पे हिट होता है राउट होगा और उसके बाद उस जनरेट पे मैंने एक बॉडी बनाई हुई है जिसमें प्रॉम्प्ट और मॉडल मॉडल मैंने प्री डिफाइन पास कर रखा है गैमा क्योंकि अभी मैं गैमा ही ले रखा हूँ आई थिंक गैमा लेटेस्ट है सो गैमा लेटेस्ट कर देते हैं उसको उसके बाद वी हैव आई सेटेड सम कंसोल डॉट लॉग कि हमें पता लगे कि एरर आ रहे हैं तो कौन से एरर आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद सिंपल एक्सट्रास पोस्ट करें ओलामा यूआरएल इज दिस विच इज पर्टिकुलर ओके ये तो मैंने समझाया ही नहीं तो ओलामा यूआरएल क्या होता है
कि मतलब ओलामा यूआरएल नहीं इंस्टेंस यूआरएल जहाँ पे कि पूरा पूरा कंपाइल हो रहा है, इट्स एपीआई। तुमने उसको रिक्वेस्ट मांगी, वो रिस्पॉन्स करेगा। जो पर्टिकुलर एपीआई और जो नेटवर्क का जो भी पूरा सिनेरियो हो रहा होता है, वो तुम्हारा ओलामा ने ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। वो तुमको एक पोर्ट देता है, ये तुम्हारा पोर्ट है 11434 जिस पे वो चल रहा होता है, और ये तुम्हारी AWS की आईपी है जिस पे तुम हिट करके मांग रहे हो चीजें। सो इसमें तुमको एक चीज मिलता है, एपीआई जनरेट इज अ रिक्वेस्ट मॉडल इन विच तुम रिक्वेस्ट करोगे डेटा के साथ, तो क्या प्रॉम्प्ट चाहिए, उसके बाद वो तुमको रिस्पॉन्स बैक देगा। ओके, सो इट्स अ बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। if you know basic of Node.js, it's simple and it's good. Let's start this particular thing, Node चैट जेएस। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ अगर दिख नहीं रहा तो। सर्वर इज रनिंग और अलामा इज, बट ये तो मैंने ऐसे कंसोल डॉट लगा रखे हैं। लेट्स टेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग सिंग। सो मैंने एक पोस्टमैन में पहले से डाल रखा हुआ है, ये हमारा पर्टिकुलर जनरेट जो हमारा एंड पॉइंट है, एंड ये पर्टिकुलर आईपी है, एंड दिस इज अ पोर्ट और सिंपल थिंग, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन प्रॉम्प्ट में हु सिंग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, बट it don't work, I think so, yes, because I tested it and मुझे मैंने इनिशियली जब इंस्टेंस जल्दी जल्दी बनाया तो मैंने रैम कम ले लिया था, और 8 GB की रैम थी, और इट्स वेरी लेस टू कंपाइल इटसेल्फ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं, लेट्स डू समथिंग। हम लोग इसमें अपना लोकल लामा चला सकते हैं, ओके, बिकॉज मेरा रैम तो इनफ है। So let's do one thing. Here we deploy our local llama. I check the front end code. Okay, let's change the IP. इतना तो तुमको समझ में आ गया, AWS EC2 इंस्टेंस। अब तुम इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, इट्स अलग पार्ट, सो उसमें नहीं जा रहा मैं। 12 point, I think local host will work here. If it's not, I will change to with a particular IP that is working. Yeah, it's not working. We have to change the, so let control C here, exit, it have to exit from exit. Okay, now sort of it's working on this IP. I have to change the IP with this. Okay, so this thing, and वो तुम्हारा डिप्लॉय हो चुका था, सब कुछ सही है, बट मेरा रैम कम है, दैट्स वाई वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। बट मैं वीडियो कंप्लीट करने के लिए तुमको दिखा रहा हूँ कि तुम नोड जेएस का यूज़ कैसे कर सकते हो, ताकि तुम ओलामा मॉडल को कंपाइल करने के बाद डेटा लेकर आ सको और दिखा भी सको। सो हु सिंग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, एंड मैंने यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, and it's again giving me some error, which is again I think the same error, which is model require more system memory. I don't think. Oh, I'm sorry. I didn't restart the server itself. I'm sorry, guys. So let's start. It will take time because it's running on my local machine. So of 16 GB RAM on M2. Come on. Come on, guys. It should not take that much of time. Yeah, so it's done. Response many enter single yada yada yada. So it's not giving the exact answer, but it's working, guys. We create our own local AI model and we connected with Node.js backend and using Postman to get the request. Now let's connect frontend too. So for frontend, no, I created a basic frontend which is looking like this. I don't go in more in React because it's then a very long video. I don't want that long. So I just want to try some basics to explain you. Nothing basics. It's just front end that I wrote. Most of the wrote I just use a chat GPT. So just I have to use this. Generate means just the particular postman thing. We tested this particular thing. Method is post, and the particular body is prompt, which is input prompt and all that. Now let's type.
Hey, send. Loading, we can add loading screen here. Gamma, hey there, it's your turn. So it's working. We create our whole own LLM model, which is working with on our own server. Plus, we deployed on AWS EC2 instance as well, and we create a front end, back end, all of them. And thanks for watching, guys. It's pretty good. We debugged a lot also, and sorry for hiccups. And keep subscribing, keep watching, and follow me on LinkedIn too. It's my Saksham Vedi. Bye bye.